Hi, good evening. So today our main focus in this session will be on integral solutions. How do we find integral solutions faster? I'll share with you tricks, formula based as well as inequality based. We'll see both. Let us start. So when we see equations of this kind, let us say 3x plus 4y is equal to 24. How do we plot this y-axis, x-axis? We make one of the terms 0, x is equal to 0, 4y is equal to 24, y is equal to 6. There will be an intercept at the height of 6. Y coordinate is 6, x coordinate is 0. Here there will be an intercept. If we make y is equal to 0, we will have 3x is equal to 24. We will have x is equal to 8. So horizontally, at a distance of 8 units from the origin, there will be a intercept. These are called what? These are called solutions. This is a solution. This is a solution. This is also a solution. If I randomly assume x is equal to 1, I will have some value for y, another solution. X is equal to 2 will give me another solution. X is equal to 3 will give me another solution. So for every value of x, there is a value for y. There are infinite points. So there are infinite solutions for a single equation. There are infinite values of x and y that can fit this equation. But I'm going to show you a pattern derived between x and y, and then we'll go into details of it. See, here, when I put x is equal to 0, I get y is equal to 6. Let me put more numbers. When I put x is equal to 1, you put 1 here, 1. It becomes 3 plus 4y, 24. That gives me y is equal to 21 by 4. X is equal to 1, y 21 by 4. X is equal to 2. When I put it here, I have 6 plus 4y, 24. That gives me y is equal to 18 upon 4. When I put x is equal to 3, this becomes 9 plus 4y, 24. Just for the derivation purpose, we are going into so much detail. So y is equal to 15 by 4. When I put x is equal to 4 here, I get 12 plus 4y is equal to 24. That gives me y is equal to 3. So I can show you the pattern here, or we can wait for more numbers to check. You can put x is equal to 5, x is equal to 6, x is equal to 7, x is equal to 8.
You notice here when you put x is equal to 8, y becomes 0. The pattern I want you to observe, the pattern I want you to remember is this. This is called an integral pair. There are infinite points, so there must be infinite integers also. This is called an integer pair. This is called an integer pair. So let me use another slide. The equation was 3x plus 4y is equal to 24. Values of x you can see here are 0, 4 and 8. 0, 4 and 8. What are the values of y? Those are 6, 3 and 0. You see, the value of x increases by 4. The value of y decreases by 3. X increases by 4, y decreases by 3. This is an infinite pattern. I'll just verify this for you in a second. As long as you increase x by 4, y must decrease by 3. Let me verify this for you. When I put x is equal to 16 and when I put y is equal to minus 6, see, this is 48 minus 24 is equal to 24. Do you see the right hand side value matches? So you can create infinite values like this. I am increasing x by 4. Can I also decrease x by 4? Check. Let me create another set of solutions for you. X is equal to 0, y is equal to 6. If I decrease it by 4, minus 4, this will be increased by 3, 9. Decreased by 4, minus 8. Increased by 3, 12. Let me check this for you. If I put this value here, 3 into minus 8. If I put 12 here, 4 into 12. So what do we have? Minus 24 plus 48 is again 24. So you can create now infinite solutions. What I want you to observe from all of this is x is increasing by 4, y is decreasing by 3. Look at the first set of values. X increases plus 4, plus 4, plus 4. Look at y, minus 3, minus 3, minus 3. When x is decreasing by 4, see, minus 4, x is decreasing by 4. What is happening to y? Y increases by 3. The only issue with this entire method is the first pair must be found manually. ये आपको manually निकालना पड़ता है, 1 put करके, 2 put करके, 3 put करके. Once you have the first integer pair, now you can create infinite many pair. Infinite pairs you can create. So what is the pattern here? पहले आप ये सब copy कर लो, comment done. If you want me to go to previous slide, let me know. इसको मैं एक यूनिवर्सल पैटर्न बना के आपको दे दूंगा. Comment done. So this is the universal pattern I want you to observe. Can I say the equation looks like ax plus by is equal to c. So that is basically addition of two numbers. Let us say this is capital Y, this is capital X. Addition of two numbers is equal to constant. If I tell you addition of two numbers is 24, you increase one of the numbers. To keep it 24, other has to decrease. You decrease first number, the other has to increase to match that. So the change is opposite. And how does that work? See, in this equation, where is 4? Coefficient of y. How does 4 appear in the solution? It appears with x. Where is 3? Coefficient of x. How does it appear in solution?
with y. So this is how you remember this. Integer value of x increases by b, integer value of y decreases by a. B impacts x and a impacts y. If you decrease x, you must increase y. So I would like you to write all these things in one place. So what kind of restrictions are placed after giving you such equations? The question will tell you x and y are natural numbers, or x and y are natural numbers, x is less than y, or x and y are natural numbers, x is more than y. So such restrictions are placed on solutions. Otherwise, there are infinite integers, there are infinite solutions. So coefficient of x impacts y. y में प्लस माइनस होगा a. कोइफिशिएंट ऑफ y b impacts x, that is plus minus होगा x में b. The change is opposite. X increases, y decreases, x decreases, y increases. Done? चलो. Now, what difference does it make if there is a minus sign? साथ में कर लो. You keep these results side by side. If the equation was of the type ax minus by is equal to c, you notice here they are subtracted. There's a difference between them which is constant. If you increase one of the numbers to maintain same difference, the other must also increase. If you decrease one of the numbers, the other must also decrease to maintain constant. So in this case, if x increases, y will also increase. If x decreases, y will also decrease. So this is a pair. This also is a pair. The change is opposite. Here they increase decrease together. Here the increase decrease is alternate. This is a pair and this is a pair. First integral pair must be found by manually putting x is equal to 1, 2, 3, 4. Whatever time it takes, you have to individually put values for x and then find y. Or you can start with y and find x. Integer value, x integer, y integer. Once you find that first integer, then you can have plus b plus a minus b minus a.
xi, the integer value of x, yi, the integer value of y. Comment done. Now, will there always be an integer pair? Observe, there's a mathematical notation for this, but I'll give you a general explanation. If you come across an equation like, let us say 3x plus, let us say 9y is equal to 221, and somebody says find integer pairs or natural pairs. So you notice 3, you notice 9. Left hand side equation is a multiple of 3. Is the right side value a multiple of 3? Is 221 divisible by 3? No. So in this case, you will never get an integer pair of x and y. Integer pairs are not possible here. Why? Left hand side equation is a multiple of 3. If x and y are integers, the overall value should be a multiple of 3. There's a mathematical notation for this. Integral solutions are possible only when the HCF of a comma b is a divisor of c. Integral solutions are possible only when HCF of a and b is a divisor of c. Abhi highest common factor means 3 common aa gaya. 3 is the HCF. Whatever is HCF can be common. So I'm trying to teach you this with basic example. Or you can look at this. Plus minus both. It is true for plus minus both. अगर a और b का common factor c को divide करता है, then you have integral solutions. Otherwise, integral solutions are not possible. So this is basic theory of integral solutions. Now there are some methods to find integral solutions very fast. So I'll give you one of those methods. I'll show you one of those methods. If I say give you an equation like 4x plus, let us take a large number, let us say 23y. Let us take a further very large number, let us say 223. Something like this is given to you. ये तो easy दिख रहा है. Let me change it further. Let us make it 9. Now, you only have to find out the first integer pair. Once you do that, you can have infinite more. So go on and try. Take 2 minutes. And for me, find the integer pair of x and y. Take 2 minutes, take 3 minutes. Find the integer pair of x and y.
Yes. 17,7 is the first pair that you have got. Okay. Let us check if it matches. So which variable did you use to replace? Did you put 1, 2, 3, 4 in X, or did you put 1, 2, 3, 4 in Y? In which variable did you put 1, 2, 3, 4? In X or in Y? I'll give you, there are multiple ways to break down these methods. Once you see the basic approach, any person who manages 85, maybe 90 percentile can apply basics and get those marks. If you want to go beyond, let us say 95 percentile, अब आपको method customize करने पड़ेंगे. So let me explain you. Where should you replace the number? देखो, once you get an integer value, next integer value is after 23 points. I don't know whether ये 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, but once you get an integer, there is a gap of 23. Once you get an integer value, there is a gap of 4. तो y में small gap है. So what you should do is you should replace 1, 2, 3, 4 here. Within 1, 2, 3, 4 आपको आंसर मिल जाएगा. Rather than always start with 0. 0, 1, 2, 3, 4 for y, answer मिलना ही है. So always replace numbers in the variable with larger coefficient. The one which has larger coefficient. उसमें replace करो, जल्दी आंसर आएगा. Now let me show you more approaches. This is the basic one. ये भाई 85 to 95 वाला बच्चा लगा देगा. इसमें replace करना है y में, the term with larger coefficient. Another way. My job is, see, 4 is a small number or a smaller number. 4 के multiple जल्दी मिलते हैं. So observe what I am doing. I am writing 4x plus. Please observe. I am writing 24y. So I am writing plus y on the right side. अब इसके नजदीक do you see 224 is a multiple, 228 is a multiple. So I'm writing it as 228 plus 1. Focus. All the numbers on this side are multiples of 4. अगर ये multiple of 4 बन जाए, I will have my answer. So y is equal to 3 will give you the first integral pair. आपको check करना है. Put 3 here, you put 3 here, तो ये बन जाएगा 69. You subtract 69, तो ये बन जाएगा 160. 160 upon 4, 40. तो ये आपका आ गया पहला इंटीग्रल पेयर. नाउ यू कैन गेट इनफाइनाइट. ये अगर 4 से बढ़ेगा, सो दिस विल डिक्रीज बाय 23, 17. ये अगर 4 से घटेगा, डिक्रीज बाय 4, -1, तो ये 23 से बढ़ जाएगा 63. This is a very beautiful, very fast method. What you're supposed to do is create multiples. पहला वाला अप्रोच क्या था? Replace numbers in the equation with larger, a variable with larger coefficient. दूसरा मेथड क्या है? Create multiples of the smaller number. ये 23 है, the next multiple is 24. बनाओ 24. तो when you add y on this side, उधर भी add करना पड़ेगा एक y. What is the nearest multiple? 228. तो 228 लिख दिया. How much remains? 1. तो आप यहां पर अगर y को -1 लेते तो भी चलता. It'll still work. y को 3 लोगे तो भी चलेगा. Yes. अभी जो मैंने मेथड सिखाया, I've shown you 2 approaches. Make sure you write down both. You write down this wording. Replace terms in the variable with larger equation. उसमें replacement करो क्योंकि उसमें gap छोटा होता है. Another way, the second method, the best method, create multiples of the smaller number.
create multiples of the smaller number. आप चाहो तो 23 को उधर बेच के भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. This will always work. 23 and 4 में HCF is 1. 1 का मल्टीपल है 229, तो इंटीजर पेयर तो मिलेगा. Comment done once you have taken care of this. Everyone comment done. ये basic theory. Now I can build upon this. I can create and give you more and more formulas. Comment done. Let us try a few questions. Chalo. Take a minute or so. Try this. Six is the answer. 6 is the answer you have got. Let me check. So again, same thing. It feels like I can create multiples of this faster. So please observe what I am doing. I am writing 6x plus 3y is equal to
123 प्लस 2 माइनस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ये मैं जीरो बना के मल्टीपल ऑफ 3 कर सकता हूं। सो आई विल टेक x इज इक्वल टू 2, इफ x इज इक्वल टू 2 तो यहां से 14 माइनस हो जाएगा 1 4, तो आई विल हैव 1 1 1, so y is equal to 37. अब obviously it says positive integral solutions, positive, तो x तो बढ़ेगा, x will increase by 3, x will increase by 3, तो x will always remain positive। मेरा टेंशन नहीं है x, my focus is y, क्योंकि x मैंने मिनिमम लिया है 2, x will increase further, y decrease होगा। तो what is the decreased value? 7 से कम कर दो 30, 7 से कम कर दो 23, 7 से कम कर दो 16, 7 से कम कर दो 9, I can subtract 7 one more time, तो this becomes plus 3, value जरूरत नहीं है, plus 3. So how many numbers are there? 1 2 3 4 5 and 6. There are 6 solutions. So yes, your answer is perfect. Your answer is perfect. You focus on only one of the terms and then keep on working with it. Now the question is, what if this was not 125 but 1257? Let us say larger number होता 1257, तो ऐसा नहीं कर सकते ना, we cannot every time add numbers. तो what you do in such questions is, मैं इसी पे फोकस करता हूं, y का पहला वैल्यू इज 37, अब every time I subtract 7 I will have a new value. y का पहला वैल्यू इज 37, every time I subtract I will have a new value, but I must keep it above 0. I must keep it above 0. So do you see 37 minus 7 into 5 is above 0. So n can be maximum 5. This is n. n can be maximum 5. मैंने n को बाहर से assume किया। To create 37, to create y is equal to 37, n can be 0 also. So 0 to 5, how many numbers are there? There are 6 numbers. Rather than solving it for x and y, why don't I put a new term n? I can convert both in the form of n. x का वैल्यू क्या होगा? It will be plus 3n. y का वैल्यू क्या होगा? minus 7n के फॉर्म में, 37 minus 7n. So n can be 0, y is equal to 37. n can be 5, y is equal to 2. So how many numbers are there from 0 to 5? Both counted 6. देखो n को हमने पॉजिटिव नहीं कहा है, n could be anything. n could be anything. Is that inequality part clear to you? चलो, take your time, try this. Positive integers where x is always less than y. तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन रेडी है, तो ये मैंने उसी के ऊपर बिल्डअप कर दिया वन स्टेप. x is less than y, yes. Less than y, yes. Yes, yes. अब less than y, no. Less than y, no. So how many cases? 4. Simple, simple enough. These are the basic conditions anyone can put on questions of integral solutions. तो पिछला वाला जो सॉल्यूशन सेट आपने लिखा है, you look at that particular solution set
and based upon that, you see in how many places, in how many cases, x is less than y. Try this. Take 3 minutes. Try this. The answer is again 6. Let us check. So in this case, again, I'll look for multiples of 5 because 5 easy है. So I'll write this as, please observe, 5x minus 5y. तो extra कितना बच गया? 3. I will send 3 on the opposite side. Now, what is the multiple of 5 nearest to this? 220, and I'm okay with this. तो अब ये दिख गया, x is equal to 1 will do the job. X is equal to 1 put करते 0 बन जाएगा. X is equal to 1. When I put x is equal to 1, यहाँ जाके minus हो जाएगा. It becomes 215. 215 upon 5, that is 43. Y is equal to minus 43. I want those values जहां पर x into y is negative.
अब x into y नेगेटिव तब होगा when 1 is positive 1 is negative. एक बार मैं ट्राई करता हूं प्लस करने का, +5 +8 +5 +8 +5 +8. देखो ये तो सारा ही पॉजिटिव रहेगा, सारा ही पॉजिटिव रहेगा. आई हैव टू फोकस. ये कब तक नेगेटिव? +8 +8 +8. अब +8 करते ही पॉजिटिव बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. सो 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4, 5 एंड 6. 6 पेयर्स बन रहे हैं. ट्रू, दैट इज करेक्ट. ये 21, ये 26. मैं रिवर्स जाके चेक करना चाहूं तो मुझे 5 डिक्रीज करना पड़ेगा, -48. तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये -8 करना पड़ेगा, -51 -51. तो ये -5 हो जाएगा, -4. सो ऑन दिस साइड दे आर बोथ नेगेटिव. दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएंगे. इसके ऊपर नहीं जाना है, ओनली हैव टू गो बिलो दिस. पहला वाला आप छोटे छोटे नंबर हैं, 8, 5 आर वेरी स्मॉल नंबर्स, तो ट्रायल एरर से भी आप निकाल लो 1, 2, 3 पुट करके. इट इज ओके. हाउ एम आई फॉर्मिंग दीज इक्वेशंस अगेन एंड अगेन? 5 का मल्टीपल बना लिया मैंने बोथ साइड्स, और जो बच गया उसको आइदर 0 कर दो या उसको 5 का मल्टीपल कर दो. व्हाट आई हैव ऑन द राइट साइड इज 3 - 3x. तो अगर 3 - 3x 0 भी बन जाए, आई एम ओके, आई एम फाइन विथ इट. ये 0 बन जाए तो भी चलेगा. x इज इक्वल टू 1 मिल गया मुझे, और वहां से y निकाल लिया. थोड़ा सा मैन्युअली करना पड़ेगा बिकॉज साइन नेगेटिव होना चाहिए बिटवीन x एंड y का प्रोडक्ट. ट्राई दिस. You are seeing a very old CAT question. Carry on. Take 2 minutes. So what you notice here is it's a 3 variable question. A test has 50 questions. A student scores 1 mark for correct answer, -1/3 for wrong answer, and 1/6 for not attempting a question. तो यहां बताने की जरूरत नहीं है, not attempting पे नंबर कट रहे हैं, numbers are decreased. If net score of a student is 32, the number of questions answered wrongly by the student cannot be less than. जो wrong answers हैं इससे लेस नहीं हो सकते, इससे नीचे नहीं जा सकते. तो बेसिकली आपसे रॉन्ग आंसर्स का मिनिमम मांगा जा रहा है. We want to find out what is the minimum number of wrong answers. So how do we go about this? Correct answers C, wrong answers W. When you not attempt a question, I'm calling it NA.
not attempted. तो ये तीनों मिला के there are 50 questions. What is the marking scheme? 1 mark for correct, -1/3 for wrong. तो यहाँ एक मिस्टेक करते हैं बच्चे. When you say 1/6, see, 1 mark is awarded for correct answer, -1/3 for wrong answer, and 1/6 for not attempting. बहुत से स्टूडेंट 1/6 प्लस कर देते हैं. ये गलत अप्रोच है. This will be -1/6. What is the score? 32. Now see, we are dealing with integral values because questions must be integers 1, 2, 3, 4, 5 or maybe 0. तो ये जो denominators इन्हें cancel कर दो. I am multiplying 6 here. I get a new equation, 6c minus 2w minus na is equal to 192. Earlier equation was c plus w plus na is equal to 50. Question किसके बारे में है? Please learn this part. Question is about wrong answered wrongly. तो w का वैल्यू कुछ भी हो जाए कैंसिल नहीं होना चाहिए. Can I cancel c? Yes. Can I cancel na? Yes. कौन सा easy है कैंसिल करना? Add both. You will notice it is easier for you and I to cancel na. प्लस करते हट गया. अब देखो आपको मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चाहिए w का. मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आप ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हो इफ यू वांट. नहीं, प्रॉपर्ली सॉल्व करना है. देखो जिसका वैल्यू चाहिए उसको अपोजिट साइड में लिखो. ये 7 का मल्टीपल है. इसके नजदीक क्या क्या मल्टीपल है 7 का? 210 इज अ मल्टीपल ऑफ 7. कितना बच गया? बच गया 32. 28 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7. हटा दे जाओ. कितना बच गया? 4 प्लस 4 प्लस w. ये मल्टीपल ऑफ 7 है. This must become a multiple of 7. What is the smallest number that makes it multiple of 7? 3. Option भी यूज नहीं करने if you don't want. Yes, 6c minus 2w minus na is equal to 192. That is correct. Yes. Try to remove one of the equation terms, one of the terms that are of no use to you. Wrong नहीं कैंसिल होना चाहिए. Wrong का हमें वैल्यू पता करना है चाहिए. That should not be cancelled. Confirm, done. Clear a solution? Moving on. Yellow. Give it a shot.
This is a prehistoric question from CAT. If I'm not mistaken, ये तब के ज़माने का सवाल है, 2004-2005 टाइप का. बट इंटीग्रल सॉल्यूशंस के बारे में है, इनइक्वालिटीज के बारे में, टुडे स्टिल रिलेवेंट. ट्राई. Comment answer. Here it says there is no solution for x less than 300, y less than 0. It says there is no solution when x is more than 250, y is more than minus 100. It says there is a solution in this range of x, there is a solution in this range of y. You see, the value of x will, once you get an integer value, it will be in the gap of 19, positive or negative. Positive or negative, in the gap of 19, you will definitely have a solution. Here, there's a gap of 50 numbers, 50, 50 नंबरों का गैप है, तो डेफिनेटली दो सॉल्यूशंस तो होंगे ही होंगे x के. So will there be a solution? नहीं बेटा, दो होंगे मिनिमम. So yes, C is correct.
बाकी चेक करने में बहुत टाइम लगेगा आपको. You'll have to put a lot of efforts to check the others, but this one is very neat, very clear. You want to check one by one, you want to negate one by one, तो पहले इंटीजर पेयर निकाल लो. 5x plus 20y. अगर मैं इस तरफ 20y लिखता हूं, राइट साइड में आई विल राइट 60 plus 4 plus y. These are all multiples of 5. तो y को 1 होना पड़ेगा, y को 1 होना पड़ेगा. और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? पुट 1 हियर, 1 पुट करके माइनस कर दो 19, तो 45. x इज इक्वल टू 9. अब आप कह रहे हो कि x का वैल्यू लेस देन 300, y का वैल्यू बिलो 0. बिलो 0 के लिए देखो 5 कम कर दिया आपने, -4, तो ये 19 आपने बढ़ा दिया 28. इज 28 बिलो 300? बिल्कुल है. इज -4 बिलो 0 है. देयर इज अ सॉल्यूशन. तो ये बाहर हो गया. अब मुझे क्या चाहिए? थोड़ा ध्यान से देखना बेटा. आई वॉन्ट एक्स टू बी मोर देन वॉट? आई वॉन्ट एक्स टू बी मोर देन 250. अब 250 तक कैसे लेके जाऊंगा मैं? मेरे को 19 19 19 ऐड करना. तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं? देखो, मैं सीधे सीधे 190 ऐड कर दे रहा हूं. अगर आपने इसमें 10 बार ऐड किया तो आपको इसमें 10 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. वेयर एम आई एट? मैं भी कहां पहुंचा हूं? आई हैव रीच्ड 218 एंड आई हैव रीच्ड -54. मेरे को 250 क्रॉस करना है. मैं और 19 दो बार ऐड कर देता हूं, तो 2 बार 5 माइनस करना पड़ेगा. वैल्यू विल रीच 256. द वैल्यू विल रीच -64. तो ये -100 से ज्यादा है, यस. ये 250 ज्यादा है, यस. तो ये बाहर हो गया. जैसे ही ये वाला बाहर हो गया, डू यू सी, फॉर x इज इक्वल टू 250 यू गॉट अ सॉल्यूशन. तो आपका सी प्रूव हो गया. वैसा थिंक सिस्टमैटिकली. The easiest way to confirm or deny was look at the gap. अभी D में there may be a solution, there may not be a solution. एक एक करके सब चेक करना पड़ेगा. In fact, -54, -54 के बाद अगला सॉल्यूशन किधर आया? 64. -54 पे आएगा, -59 पे आएगा और -64 पे आएगा. तो इस रेंज में तो कोई नंबर नहीं है. Take your time, copy this down if you need to. Otherwise, comment done. Everyone comment done. Try this. Because it clearly says x and y are positive integers,
एंड y इज मोर देन इक्वल टू x, मुझे y अपर साइड पे चाहिए, तो मैं सीधा देखो यहाँ पे आई कैन टेक y इज इक्वल टू 38, x विल बिकम 1। अब क्या करोगे आप, इसको दो दो करके घटाओगे और इसको एक एक करके बढ़ाओगे एज लॉन्ग एज दिस इज ट्रू। लेकिन आंसर कैसे हैं, 7 वैल्यूज, 13 वैल्यूज, 14 वैल्यूज, 19 वैल्यूज, 20 वैल्यूज। अगर ये 4 की जगह 400 होता, आंसर कुड बी 130, 150, 180, तो कैसे चेक करोगे? प्लीज ऑब्जर्व हियर, this decreases by 2n and this increases by 1 into n। ये चाहिए आपको, दिस इज व्हाट यू वांट। n का स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, समझो when n is equal to 0 तो y का वैल्यू 38, 0 is a possible value for n। इसको रीअरेंज कर दिया, 3n is less than equal to 37, n is less than equal to 12.33। तो कौन सा इंटीजर आएगा लेस देन 12.33? n can be 0, 1, 2 up to 12। So how many solutions you have? 13। बेटा इससे फास्टर मेथड नहीं हो सकता इन द मार्केट, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स कहा है तो 0 शुड नॉट बी कंसिडर्ड, 0 इज अ न्यूट्रल वैल्यू। बट अगेन मैन्युअली क्यों करना है, व्हाई डू यू वांट टू डू इट मैन्युअली? मैन्युअली करके क्या मिलेगा हमें? वंस यू नो y नीड्स टू बी मोर देन x, तो मैंने y के साइड से देखा, if I take y is equal to 38, x is equal to 1 आ गया। That is my first integral pair, that is the first pair I have got। अब मैं क्या करूंगा, every time y decreases by 2, every time y decreases by 2, x will increase by 1। तो मैंने y को 2n माइनस कर दिया और x को 1 इंटू n प्लस कर दिया, y must be more, तो n के फॉर्म में सिंगल टर्म आ गई, n is less than equal to 12.33। n can be 0, n can be 1, n can be 2, n can be 3। वो जब 2 माइनस कर रहे हो वही तो n है ना, एक बार माइनस हुआ तो 2 n इज इक्वल टू 1, दो बार माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तीन बार माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो आपने n के फॉर्म में y को और x को कन्वर्ट कर दिया। n can go from 0 to 13, 0 to 12, 0 to 12 there are 13 solutions, 13 values। Confirmation on this? Try this।
So this question can very well be solved by options. If options were not given and the question was somewhat like comment your answer to the nearest rupees, the word is nearest rupees, तो ये काफी difficult सवाल बन जाएगा. Reason being, you'll see, a confused bank teller transferred or transposed rupees and paisa when he cashed a check for Shailaja, giving her rupees instead of paisa and paisa instead of rupees. After buying a toffee for 50 paisa, Shailaja noticed she was left with exactly 3 times as much amount on the check. So imagine Shailaja is carrying a check for X rupees and Y paisa. Bank teller makes a mistake and he interchanges. He offers what? He offers Y rupees and X paisa. This is what the bank teller does. Transposes, interchanges. This is what she has got. This is what she has got. Now she takes the money without thinking. From this money, she spends 50 paisa. 50 paisa is spent. Now she realizes the money she has right now is triple of the money on the check. The money she has in her pocket is 3 times as much amount on the check. So here if you observe, I can convert rupee into paisa. I can say earlier it was 100x. X is rupees, now 100x is paisa plus y into 3 is equal to 100y minus x minus 50. ये बोल रहे हैं आपको सॉल्व करो and by solving this आपको केवल रुपीस बताने हैं. Does this person have money between 13 or what was the initial amount? X का वैल्यू मांग रहे हैं आपसे. This becomes 300x plus 3y is equal to 100y minus x minus 50. देखो मैं कैसे कर रहा हूँ. I am transferring it on opposite side. 299x. Transferring this on opposite side. 97y minus 50. अब minus 50 को भी इधर भेज दो, क्या फर्क पड़ता है? Plus 50 ये कट गया यहाँ से. Now see, if I tell you I have 5 rupees and some paisa, or if I tell you I have money between 5 and 6 rupees, तो rupees तो 5 हुए ना. तो only thing you need to do is, अगर किसी के पास 4 और 5 रुपए के बीच में है, x is equal to 4 पुट करके देखो. Are you getting an integer value for y? Between 13 and 14 rupees you have, तो you replace x is equal to 13 and check क्या बैठ रहा वैल्यू. Replace x is equal to 7, 22, 18. इनमें से जो वैल्यू बैठ गई वो आपका आंसर है. क्या try putting in x is equal to 4. किसमें 4 पुट करना है? in 299 into x plus 50. It must be divisible by 97. या ऐसा लिख लो सीधा. ये देखो, टू 99 into x plus 50 upon 97. ये अगर डिवाइड हो गया तो आपका आंसर आ गया. ऑप्शंस नहीं होते इवन देन इट इज सॉल्वेबल. अब वो डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस कितना किया है. अब देखो x is equal to 12 फिट नहीं हुआ. यूज अ कैलकुलेटर, इट इज फाइन, यू आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर इन एग्जाम. 299 into 13 plus 50, ये भी फिट नहीं हुआ. आई एम गेटिंग डेसिमल नंबर्स. 299 into 7 plus 50, ये भी फिट नहीं हुआ. 299 into 22 plus 50 divide by 97, ये भी फिट नहीं हुआ. Only option is E which fits. 299 into 18 plus 50
डिवाइड 97 एब्सोल्युटली। तो ये आ रहा है मेरे पास 18 रुपीज and 56 paisa was the check amount. Check amount was 18 rupees 56 paisa. So इतना बड़ा बड़ा कोएफिशिएंट देख के पैनिक नहीं करना है। सवाल बनेगा make sure you are following proper steps. To avoid calculation mistakes, you can use a calculator also. Solution clear है? Confirmation on this? आप इसको एक बार ट्राई करना विदाउट एनी आंसर ऑप्शंस। How would you solve this entire question without answer options? Moving on. Try this. Take 3 minutes. Try this. We want x and y both to be natural numbers. What if I tell you ये 3 step का question है? In 3 steps you will have your answer. देखो, मैं अगर x is equal to 70 पुट कर दूं तो y 0 हो जाएगा। 0 is not a natural number, तो 70 नहीं हो सकता। तो अगला 3 कम कर दो, this will be 63, 67, 67। ये x का वैल्यू है पहला, x का वैल्यू 67। तो ये 0 था तो 2 बढ़ जाएगा, y का वैल्यू इज 2। अब इनको रख के चेक कर लो, यू पुट दीज नंबर्स इन चेक। अब क्या होगा, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर। What is going to happen to y? Y will keep on increasing by 2.
तो y तो नेचुरल रहेगा ना, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। मेरा टेंशन क्या है, ये 67 इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। अब ये डिक्रीज होगा 3 से। हाउ मेनी टाइम्स कैन आई डिक्रीज? आई कैन डिक्रीज 22 टाइम्स। बेटा अगर डिक्रीज नहीं करोगे, बेसिकली n का वैल्यू 0 से शुरू होगा। फॉर x इज इक्वल टू 67, दिस इज वैल्यू ऑफ n एंड दिस इज वैल्यू ऑफ n। तो n कैन बी 0, 1, 2, 3 up to 22. There are 23 solutions. There are 23 solutions. n can be 0, ये ध्यान दो आप, n can be 0. What is general form? What is general form of x? X integer is equal to 67 minus 3n. n अगर 0 है, x will be 67. I'm okay with this. n is equal to 1, 64. n is equal to 2, 61. n is equal to 3, 58. ये चलता जाएगा। हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी वैल्यूज कैन n टेक। You will not find this kind of approach in book or in mocks. Usually people keep these methods saved till last. हम आखिरी में करवाएंगे, उसे कुछ फैंसी नाम दे देंगे, रेस टू 100 परसेंटाइल, द लास्ट किलोमीटर। क्या फर्क पड़ता है नामों से? पहले पढ़ा दो तो बच्चों का भला हो जाए, बच्चा ज्यादा यूज करके जाए एग्जाम में। Learn this, we'll move on from this. अब एक ये जादुई मेथड देखो, पर इट इज वेरी रिस्की। अभी ऑप्शंस कंसेक्यूटिव है, नेवर अप्लाई दिस मेथड, क्योंकि कई बार ये आंसर से +1 या कई बार -1 दे देता है आंसर से। तो लोग कहते हैं नियरेस्ट इंटीजर। नहीं नहीं, डोंट। व्हेन ऑप्शंस आर कंसेक्यूटिव और थीटा क्वेश्चन है, डोंट अप्लाई दिस मेथड। फॉर ऑल सच अप्रोचेस, ऑल सच क्वेश्चंस, number of pairs, number of natural pairs is nearest to constant divided by LCM of both A and B. तो 140 divided by 6, 140 divided by 6, 6 into 2, 12, 23. तो 23 के आसपास आंसर होगा। इट कुड बी 22, इट कुड बी 24 ऑल्सो। यहां पर एग्जैक्ट मैच कर गया, कई बार ये एग्जैक्ट मैच नहीं करता बेटा। सो write this with a limitation. Don't apply this method when options are consecutive. एक ऑप्शन 19 होता, एक ऑप्शन 23 होता, एक ऑप्शन 25 होता, एक ऑप्शन कुछ और होता। ऑप्शंस में 2-2 का 5-5 का गैप है। गो फॉर दिस। डिवाइड द कांस्टेंट वैल्यू बाय एलसीएम ऑफ बोथ ए एंड बी। अब ये डेरिवेशन इज थ्रू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन टर्म निकालने का फॉर्मूला आप लगा रहे हो। No, it is only designed for ax plus by. बेटा नेचुरल पेयर्स, अगर माइनस हो गया तो इनफाइनाइट पेयर हो जाएंगे ना, इंटीजर तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। because they both increase and both decrease together.
दैट इज व्हाट आई एम सेइंग बेटा, डेसिमल आएगा तो वही मैं बोल रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रटना नहीं है। देयर इज नो रीजन की राउंड ऑफ ही करना है, कोई जरूरी नहीं है। द एक्चुअल नंबर कुड बी 24, एक्चुअल नंबर कुड बी 23 ऑल्सो। ये आंसर से +-1 देता है, अंडरस्टैंड द लिमिटेशन। एनीबडी हु सेज ये हमेशा आंसर देगा, बेटा रिवर्स डायरेक्शन में भागना है, सामने वाले को पता नहीं व्हाट ही और शी इज सेइंग। ये बड़ा पुराना सवाल है, कई सौ सालों से चल रहा है। गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट। सो आई कैन शो यू ऑनलाइन, इस पे बड़े फ्रॉडुलेंट से मेथड लगा रखे हैं लोगों ने, क्योंकि x का वैल्यू 17 से चेंज होगा, 17 से। तो अप टू 1000 17 के मल्टीपल्स कितने हैं? 17 इंटू 5 इट इज 85, आ गया नीचे 15। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस इज 153, so 8 times. There are 58 solutions. ये क्या कर रहे हो? What is this? ये फर्जीवाद है बेटा। मे बी द आंसर इज 58, आई डू नॉट नो, बट ये क्या कर रहे हो? विल इट नॉट मैटर कि x का एक्चुअल में पहला वैल्यू क्या है? 17 का गैप इज फाइन, ये गड़बड़ कर रहे हो आप। देखो हियर यू सी, दिस इज 4x minus 16y is equal to 1 plus y. देखो here y must be minimum 3, y must be 3। देखो y is equal to 3, तो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। लेट मी पुट 3 हियर, ये आ गया x is equal to 13, y is equal to 3। अब चेक कर लो यहाँ पुट करके, ये 3 तो 51, तो 52 अपॉन 4 13, तो पहला वैल्यू 13 है। तो यू आर सेइंग 13 के बाद अब क्या होगा? +17 +17 +17 +17। तो आई एम सेइंग 17n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1000। आपको कैलकुलेटर लगता है, यूज करो। n कहां से शुरू होगा? n स्टार्ट्स फ्रॉम 0, n is equal to 0, x is equal to 13, I am fine with this। अब लार्जेस्ट कितना होगा? तो 1000 minus 13, 1000 minus 13 divided by 17। तो ये जा रहा है, n is going up to 58 point something। तो what is the maximum value of n? What is the answer? ये आपका आंसर 59, not 58, 59।
बेटा लेस देन इक्वल टू 58 पॉइंट समथिंग है, तो 0 to 58, 0 to 58, how many values are there? 59 values are there. Try this. So not exactly linear equation का सवाल, but equations ना रहे basically. Let's check. By giving you some equations between x, y, and z, we want to know x is less than y, x is greater than y, x is equal to y, or none of the above is true. So basically the comparison is between x and y. I need to discard or remove z first. Z को वहां से हटाना है. So can I write z is equal to, look at this, 13x plus 1 less than twice of 5y square plus 3. थोड़ा rearrange कर देते हैं. 13x plus 1 less than 10y square plus 6. Now either I work with square root or I work with square. देखो मैं दोनों ट्राई करता हूं. Can I write this further as 13x less than 10y square plus 5. अब देखो, because it is a square, it is a square. स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है? इट कैन चेंज साइन ऑफ नेगेटिव. तो मैं एक दो नंबर ट्राई करता हूं. ऑब्जर्व, आई एम पुटिंग y is equal to -1. So I am saying 13x is less than 10 plus 5. X is less than 15 by 13, which is 1 point something, 1 point PQ or something. तो x का वैल्यू 1 आया ना. देखो आपने कहा था y is equal to -1, मेरे पास x is equal to 1 आ गया, लेकिन x क्या आया? लेस देन 1 पॉइंट PQR. तो लेस देन 1 पॉइंट PQR में तो -10 भी आता है, -15 भी आता है. तो in some cases x is less than y, in some cases x is more than y. So there is no necessary relation between the two. मैंने y को -1 क्यों लिया? आप +1 लो, फर्क नहीं पड़ता. If I take y is equal to +1, y is equal to +1, here x is less than, please observe, x is less than 15 upon 13, which is again 1 point PQR. अब यार इंटेजर है, ये किसने बोल दिया भाई? अगर मान लो ये लेस देन होता 1 पॉइंट, let us say 1.133 लेस देन होता, x is equal to 1.122 ले लो ना. क्या है ये?
इज इट अबव वाई? यस, लेकिन आपने कहा इट इज लेस देन 1.133, तो लेस देन 1.133 में तो जीरो भी आता है. इज इट अबव वाई? नो, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन एक्स एंड वाई एज सच. हाँ, प्लस माइनस आप देख लो, यू अरेंज प्लस माइनस वाई वट एवर इज देयर, आपको ऐसे रिलेशन आएगा. देयर इज नो कंफर्म वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. द प्रॉब्लम इज द स्क्वायर पार्ट. स्क्वायर पार्ट ये मैं फिर से अरेंज करता हूं आपके लिए, देखो आप. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर? इट चेंजेस साइन. अच्छा, ये -3 आएगा, ये बोल रहे हो आप. ये तो इफ आई हैव हियर -3, तो ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -7. चलो गो विद दिस. इफ आई टेक y इज इक्वल टू -1, बड़ा नंबर लो, -2 लो, क्या फर्क पड़ता है? टेक एनीथिंग लाइक -2 लिया मैंने, यहां पुट किया, तो जाएगा 4. 13x इज लेस देन 33, मैंने ये पुट किया. अभी देखो, x इज लेस देन इक्वल टू 33/13, which is almost 2 point something, 2 point ABC. अब 2 point ABC, x को 2 ले लो, x को 1 ले लो, x को 0 ले लो. These numbers of x are above y, above y. लेकिन अगर आपने x को, क्योंकि it is below something तो इनफाइनाइट भी हो सकता है ना, below. In some cases x is below, some cases x is above. None of these. The problem is square. Yeah, I have corrected that. See. Is this clear? Done, eh? Yeah. Now we'll meet on Monday with more questions, more higher level questions. Theory wise, we have covered basics of integral solutions. Two variables, there's a formula. Increase decrease happens through a and b. We have seen that. We have seen the LCM wala formula as well. We have seen how to create integral solutions faster. थ्री वेरिएबल्स का क्वेश्चन थोड़ा आने लग गया है, कैट में थोड़ा फ्रीक्वेंट हो गया, तो आई विल टीच यू दैट आल्सो इन द नेक्स्ट सेशन. या, गुड नाइट.